Welcome to you again, and I am Imranullah to discuss the main important points about the basic structure of the sentence, uh, and also the basic concept of the syntax with the perspective of the generative grammars and new Chomsky ideas. And before this, I also define the concept of the morphological structure of a word and a sentence, and little bit about the concept or idea of the ICA with specific examples. And now I want to move forward and to explain the second part of this lecture. And this is part second or part two. The title of this lecture is generative grammar. What's mean by generative grammar? According to the perspective of the modern linguisticians, the name is very well known, and the history of the linguistic and philosophy and modern grammar. His name is Liam Chomsky, MIT professor. And according to the New Chomsky, criticized grammar that concentrate upon the linear structure of the sentence. The concept of the New Chomsky about the generative grammar is that it is a kind of sentence which is based on subject, verb, and object, and the sentence have a common structures, a well structure or form of a sentence is based on a linear structure of the sentence, and it focus on the linear structure. And what mean by the linear structure? Linear structure means there's order, the order of the sentence. The most obvious principle of sentence organization is linear order. It is very important, and it is the basic principle of a sentence. And if you want to organize a sentence, so first of all you need to in order, which type of order? Linear order. The words in a sentence must occur in a particular sequence if the sentence is to convey the desired meaning. Consider, for example, the following example. And if you want to explain, so first of all you need to focus on the sentence. A sentence is well structured or not. Okay, if the sentence have a subject, a verb, and object, so it's mean this is called linear structure. And one of the basic example is if we arrange the words in this sentence, we either come up with nonsense, as in to the denotes an ungrammatical expressions. The example, a linear sentence means that a well-structured form of the sentence. For example, Mary glanced at John. This is the first example. And the second example, if you want to arrange the sequence of this sentence, like the second example, star, Mary John at glance. What's mean by the star? The star denotes that in syntax ungrammatical expressions. Okay, and the second example is Mary John at glance.
And what is the difference between the first sentence and second sentence? The second sentence and third sentence are with a sentence whose meaning is distinctly different from the one. Okay, so the first sentence or the third sentence and second sentence you can compare with each other, and you can see some differences between these two parts. Mary John at glance and Mary glance at John. Okay, so what is the main problem, the issues? The main problem of this sentence is the sequence. So this type of sequence is called a linear structure of the sentence, like 3. Clearly the ordering of the words and sentences determines in part whether a sentence is grammatical or not, and what the sentence means. If the sentence is grammatically correct, so it means that everybody easily understand the main idea of the sentence. If the sentence is grammatically wrong, so the main idea of the sentence is not well for the reader, for the students, okay, for the learner, for the beginner. One of the many rules of the English requires that the grammatical subject of a sentence normally precede the main verb, which is term normally precedes its direct object. Thus, she resembles him. In English, where he is the subject and him is the object, but resembles he, him, and she, him resembles or not. Okay, what is the main idea of this paragraph? The main idea of the paragraph is that if you want to directly talk about in the sentence, so it's mean that the subject is directly proportional to the object. Okay, otherwise the object is directly proportional to the subject. Okay, one is the subjective form of the sentence and another one is the objective form of the sentence. If you want to change the sequence of the subject to the object or object to the subject, so it's mean that the meaning of the sentence is same. Okay, she resembles him. Okay, here she is directly proportional to him and she refers to him. And otherwise, if you want to change the positions of the words resembles, she, him, so this type of sentence is not fulfill the meaning of the idea or meaning or idea. It is a part of sentence and it gives sense but not complete sense. It's wrong grammatically, it's wrong. Okay, and syntactically it's wrong and semantically it's correct. Okay, or for any readers. But resembles she, him, so it's mean that you want to change the positions of the verbs, subject and object, and she, him resembles or not. And otherwise, this type of sentence is called generative grammars. This is the main concept of the generative grammar. Okay, and generative grammars just for a few seconds. Okay, he concentrated upon a kind of grammar that has a set of rules and that generates an infinite number of sentences and a language. And here, so it's mean that's the artificial language. And okay, it focus on two sides. The first one, generative grammar, is focusing on two sides. One is artificial language and the second one is I forgot the second name.
natural language. Okay, so he concentrated upon a kind of grammar that has a set of rules that generates an infinite number of sentences. You can make infinite number of the sentences from one sentence. Okay, it is the way of, and it is the main idea or the main concept of the generative grammar. That is why it is called generative grammars. Okay, some properties of the grammars. And the first one is a grammar of this kind must have a number of properties. The first one is the grammar will generate all the well-formed syntactic structure. Syntactic structure means there's sentence, different type of sentence and his structure. You can change and you can enter new words in a sentence like I love books. Okay, so it's mean that I love many books. We can put here a new words many, and you can put new words in this sentence. So it's mean that the syntactic structures it is well form of sentence structure means that a new words you can add a sentence of the language and fail to generate any L form structures. And otherwise, to account for all grammatical sentences, to remember that what type of grammatical sentences you need and its rules, regulations, it also requires for any type of sentence. Property number one. Here you can see the first example: enormous crickets and pink socks dance at the prom. You can see this is the first sentence, and if you want to arrange the structure of this sentence, so you can make a new sentence. This is the first sentence. If you want to structurize a well structure of the you would like to find out the well structure of this sentence, so first of all you need to focus on the basic concept of the generative grammars, and after that you can put and pick out some words from this sentence like extra word, or sometimes we can say inflection form of the verbs, etc, etc. And another one, another example is milk the crumble verb are. So what? So it's mean this is the second example. And the third one is colorless green ideas sleep asleep furiously. Number two, this grammar will have a finite number of rules. Finite number of rules. One is infinite and the second one is finite. So it's mean that grammar will have a finite number of rules but will be capable of generating an infinite number of well-formed structures. And this way the productivity of a language would be captured within the grammars. Okay, a property number two, like S. What's mean by S? S refers to NP and plus VP, and NP refers to art plus N. So what's mean by S stand for what, and NP stand for what, and VP stand for words, and NP art plus N. So this is the second property, and second property is mean that a sentence is based on S refers to, or S stand for sentence or subject, and refers to like simply we can say that S means that sentence is based on NP. N is stand for noun and P is praise. So we can say that's noun praise plus a sentence is based as the combination of VP. VP mean that verb praise, NP noun praise refer to art plus nouns. Okay, so it's mean that noun praise mean that art is a noun, and we can show synthetically
and the tree diagram on N. Okay, the third, this grammar must be recursive. What's mean by recursive? It is very important. One is recursive, and second related to this word is productivity. Or what is the difference between the recursiveness and productivity? So recursiveness is the capacity to be applied more than in generating a structure. So it's mean that you can add new words in a small sentence, in a simple sentence, and it gives us more sentence like this. I want to explain in Urdu because it is very important for our students. Recursiveness उस मेथड्स को या उस चीज़ को लिंग्विस्टिक या सिंटेक्स में कहा जाता है जब आप लोग किसी सेंटेंस में एक वर्ड होता है, वो नाउन होता है और उसके साथ आप एडजेक्टिव ऐड कर देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हैप्पी है और उसके साथ मैं नाउन ऐड कर देता हूँ, यानी हैप्पी डॉग. ठीक है, तो ये एक सेंटेंस हो गया. अभी मैं ऐसा काम करता हूँ कि हैप्पी के साथ मैं जो है ना बेड यूज़ करता हूँ, तो ये बन जाएगा बेड डॉग. ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर हमारे पास एक सेंटेंस है और उसी सेंटेंस में हम और अल्फाज को ऐड कर देते हैं ना, तो इसको कहते हैं रिकर्सिवनेस या रिकर्सिव मेथड, इसको लिंग्विस्टिक में कहते हैं. ठीक है, इन लिंग्विस्टिक्स recursions is an important principle how natural language are structures. अब देखो, एक हमारे पास आर्टिफिशियल लैंग्वेज है और एक नेचुरल लैंग्वेज है. नेचुरल लैंग्वेज वो जो जिसको हम आजकल AI के नाम से पुकारते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कोड किया जाए, जो कोडिंग पर मुश्तमिल होते हैं, मुख्तलिफ उसमें चीज़ें डाले जाते हैं और वो उस कोडिंग पर काम करती है. ठीक है, तो हमारे पास एक नेचुरल लैंग्वेज होता है और एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज होता है. आर्टिफिशियल लैंग्वेज जो कंप्यूटर रिबोट या रिबोटिक के लिए यूज़ की जाती है, और जो नेचुरल लैंग्वेज होती है जो इंसान, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो लैंग्वेज है वो पश्तो है. ठीक है, तो जब इंसान पैदा हो जाता है ना, तो ये लैंग्वेज उसके साथ आ जाती है. इस तरीके से अरबिक लैंग्वेज है तो वो अरबों के साथ आई हुई है. तो ये एक नेचुरल लैंग्वेज है. तो नेचुरल लैंग्वेज का जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, वे ऑफ राइटिंग होता है, वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता. ठीक है, लाइक जिस तरीके से हम कहते हैं कि ये सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये तीन मेन चीज़ें जो है ना, ये एक सेंटेंस में शामिल होगी. लेकिन आफ्टर दैट जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं ना, तो उसमें हमारे पास ये तीन चीज़ें हो गई, लेकिन उसके साथ साथ और चीज़ भी होते हैं. डिटर्मिनर होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, आर्टिकल होता है, प्रीपोजिशंस होता है. ठीक है, सेंटेंस जो होता है कभी एनाफोरिक फॉर्म में होता है, कभी कैटाफोरिक फॉर्म में होता है. ये सारे चीज़ होते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? इसको नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं. तो नेचुरल लैंग्वेज का जो रूल रेगुलेशंस होता है वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि आई एम गोइंग. अब जो है ना, ये एक नेचुरल लैंग्वेज है. ठीक है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता. अगर चेंज करेगा ना, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई मुदाखलत करेगा तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और सब्जेक्ट ना वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा. तो इसका जो वे ऑफ जो ऑटरेंस है ना, जिस तरीके से हम इसकी अदायगी करते हैं ना, तो ये फिर इसमें एम्बिग्विटी आएगी. तो ये सेंटेंस जो है ना ग्रामेटिकली गलत साबित हो जाएगी. तो नेचुरल लैंग्वेज का जो प्रोसेस होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता. तो रिकर्सिव मेथड लिंग्विस्टिक और स्पेशली सिंटेक्स में वही होता है जो नेचुरल लैंग्वेज में होता है और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, बल्कि उसी लैंग्वेज में कोई ऐसा वर्ड डालें और वो फर्दर जो है ना वो बढ़ जाए और वो उसी में सूट करता है, तो वो क्या बन जाता है? वो सेंटेंस अपने साथ दूसरे चीज़ों को लाता है और समाता है अपने आप में. तो इसको रिकर्सिव मेथड कहते हैं. ठीक है, रिकर्सिव का मतलब ये है कि एक चीज़ जिसमें रिपीट हो जाता है, बार बार एक चीज़ आता है उसमें, उसको रिकर्सिव मेथड्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, आई हैव अ स्मार्ट डॉग. ठीक है, अब देखो
इस सेंटेंस को अगर हम जो है ना इसकी कैटेगराइजेशंस करें तो आई मेरे पास है, नीचे मैंने आप लोगों को दिया है। इसके हम जो पार्सिंग जब हम करते हैं ना, और इसको हम जब सिंथेटिकली या ट्री बार डायग्राम पर हम इसको पुट कर देते हैं और इसको हम कैटेगराइज, इसकी जो कैटेगरीज होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम उसी स्ट्रक्चर पर ड्रा करेंगे तो हर एक चीज़ का पता चल जाएगा। लाइक आई जो है ना वो नाउन है, इनका मतलब है नाउन, हैव जो है ना वर्ब है, और ए जो है ना डिट है। अब ये डिट क्या चीज़ है? डिट मीन दिस डिटर्मिनर, जो डिटर्मिनेशंस करता है, ठीक है, जिस तरीके से आर्टिकल होता है वो ए आर टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सिंटेक्स में जब डिट आता है तो डिट का मतलब है डिटर्मिनर। स्मार्ट जो है ना ये एडजेक्टिव है, डॉग जो है ना वो नाउन है। अब इन चीज़ों को जब हम एक सीरीज़ में लिखते हैं ना तो इसको हम आई को जो है ना हम नाउन प्रेस कह सकते हैं, हैव को जो है ना हम वर्ब प्रेस कहते हैं, ठीक है। जो है ना ये डिटर्मिनर है, स्मार्ट जो है ना ये एडजेक्टिव प्रेस है, डॉग जो है ना नाउन प्रेस है। तो ये चीज़ें जब एक साथ हमारे साथ मिलती जुलती है और इसमें कोई नया चीज़ हम पुट अप कर देते हैं ना तो उसको हम क्या कहते हैं और दोबारा लिखते हैं। ये एक सेंटेंस हो गया, यानी ये सेंटेंस हमारे पास बन के आई हैव अ स्मार्ट डॉग। तो अगर इसमें कोई ऐसा वर्ड हम पुट करें कि इस पर कोई असर ना आए और वो भी वेल फॉर्म हो, ग्रामेटिकली वो ठीक हो, तो वो एक नया सेंटेंस बन जाएगा। तो इट्स मीन दैट कि जिस तरीके से आप एक सेंटेंस में अल्फाज डालते हैं और उसका मतलब वाज़ेह हो जाता है और उसी सेंटेंस पर कोई असर नहीं पड़ता, तो उसको हम कहते हैं रिकर्सिव मेथड लिंग्विस्टिक में, या रिकर्सिवनेस मेथड उसको कहते हैं, ठीक है। Property number third, first of all, look at this example, and we can make a lot of sentence from this example. Okay, I hate war, and how this is the first example, and you want to add something in the beginning of this sentence. You know that I hate war. This is the second example. We put something and to the first example, like the first example is I hate war, and we need to add you know that I hate war. The second and third sentence, he knows that you know that I hate war. I want to explain again in Urdu. अब देखो हमारे पास एक सेंटेंस है, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? एक सेंटेंस है हमारे पास, वो है आई हेट वॉर, ठीक है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जो है इस सेंटेंस के साथ हम कुछ और चीज़ें ऐड कर देते हैं ताकि ये और भी जो ना इसकी जो सीक्वेंस है वो बढ़ जाए। तो हमने इसके साथ सेकंड जो हमने सेंटेंस बनाया वो बन गया यू नो दैट आई हेट वॉर। ये एक सेकंड नया सेंटेंस बन गया। अब जो है ना अब थर्ड नंबर हम जो सेकंड सेंटेंस है ना, सेकंड सेंटेंस से या आगे या पीछे या दरमियान में कुछ अल्फाज और डालते हैं ताकि इससे एक और मीनिंगफुल जुमला हमारे पास या सेंटेंस आ जाए। तो वो कैसे बनेगा? वो ये ही नोज़ दैट यू नो दैट आई हेट वॉर। यानी इसका मतलब ये है कि नेचुरल लैंग्वेज में आप जो भी ऐड कर देते हैं ना तो उसका एक नया सेंटेंस जब बनता है ना तो वो पहले वाले सेंटेंस की वजाहत करता है और वो और भी एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। तो जनरेटिव ग्रामर का ये एक सबसे खूबसूरत और एक अच्छा तरीका ये है कि जनरेटिव ग्रामर में जो नेचुरल लैंग्वेज होती है ना, नेचुरल लैंग्वेज में आप जो भी चीज़ पुट अप करते हो ना तो उससे एक नया इन्फिनिट नंबर ऑफ सेंटेंस जो ना उससे बन जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसका था? इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द लियाम न्यू चॉम्स्की अबाउट द जनरेटिव ग्रामर एंड मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। And the fourth, this grammar should be also capable of revealing the basis of two phenomena. The first one is, first, how some superficially distinct sentences are closely related. So it's mean that sentences both are interconnected with each others, okay? And property number number four, the student solved the problem. Okay, this is
And the first example, the second example, the problem was solved by the student. So here's the structure of the whole sentence, the phenomena of the whole sentence is changed from the previous examples. Okay, and the previous examples we directly do some things, and here's you can see there's something, some ambiguity, and this and the second sentence. Okay, the first sentence, the student solve the problems. Okay, so it's mean that a student do some things directly, and in other wise, and the second example, the problem was solved by the student. I want to explain again and Urdu. अब देखो जो ऊपर है ना उसमें सब्जेक्टिव फॉर्म जो है ना वो रेफर किया जा रहा है ऑब्जेक्टिव फॉर्म को, ठीक है, यानी ये एक डायरेक्ट एक चीज़ है, और ये हमारे पास इस मेथड को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। अब जो है ना जब कोई चीज़ जो है ना पैसिव फॉर्म में होता है ना, तो उस फॉर्म में क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्ट पर काम किया जाता है लेकिन पता नहीं चलता कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ गया और ऑब्जेक्ट किधर गया, वर्क की कौन सी हालत लग गई, इसमें नए कौन सी चीज़ ऐड हो गई, और इसमें जो पहले वाले जो चीज़ थे वो कहाँ गायब हो गए। तो कुछ चीज़ों का एडिशन इसमें होता है और कुछ चीज़ों का जो है ना वो इससे ख़त्म किए जाते हैं। तो इसको हम लिंग्विस्टिक में सरफेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। असल में ये बात हो रही है प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है ना ये रिलेटेड है किस चीज़ के हवाले से, सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर के हवाले से। And second, how some superficially similar sentences are in fact distinct. So it's mean that one sentence is different from another sentences on the basis of his time, on the basis of his verb, etc., etc. And any walked man with an umbrella. This is the example. So visiting relatives can be boring. The second example, they hatred of the killers. Okay, now this is the second most important or the third important topic of the syntax, what's mean by deep structure and surface structures. Okay, the surface structure is actually produced a structure. It refers to the sentence as it is pronounced or written. The deep structure is the abstract structure that allows a native speaker of a language to know what the sentence means. Okay, and after that, so the surface structure is that which takes into account the transformation. Okay, transformation means that one thing is transferred from another. So the subject is transferred from the position of the sentence is changed from subject to object or object to subject. Okay, it is the deep structure. It is the deep structure of a sentence that tells us what the speaker means by the sentence, and it is the surface structure that shows how he actually uses it in communication. And also it is it may be then be said that the deep structure expresses the semantic content of a sentence, whereas the surface structure of the sentence determines its phonetic form. And transformation function is a link between the deep structure of a sentence and the surface structure. Like for example, I want to give you an example, the surface structure and the deep structure. Like surface structure, visiting doctors can be a visiting doctors can be a nuisance, and
the deep structure, we visit doctors, the first, and otherwise the second example of the deep structure, it can be a nonsense, and the third example is doctor visit us, and the fourth, they can be a nonsense. Okay, so it's mean that हमारे पास जो डीप स्ट्रक्चर होते हैं और सरफेस स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, सरफेस स्ट्रक्चर जो होता है वो एक सेंटेंस होता है, और डीप स्ट्रक्चर जो होता है ना वो उसकी डिराइवेशंस होती है, उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फोनेटिक स्ट्रक्चर जो होता है ना वो चेंज किया जाता है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कह दिया ना, तीन चीज़ें हमने जो है ना लास्ट में पढ़ ली कि इट मे बी देन be said that the deep structure expresses the semantic content of sentence। अब semantic contents of sentence किसे कहते हैं? अब देखो, अगर सेंटेंस की स्ट्रक्चर को मैं चेंज कर लूँ, फॉर एग्जांपल गोइंग टू होटल और बाज़ार, तो ये सेंटेंस जो है ना ये सेमेंटिकली ठीक है। क्यों? सेमेंटिक का मतलब है मीनिंग, यानी ये हमें कुछ ना कुछ आगाही दे रही है ये सेंटेंस। अगर सिंथेटिकली या सिंटेक्स में इसको देखा जाए तो ये सेंटेंस जो है ना ये गलत है। क्यों? इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो गलत है। ठीक है, एक ये। दूसरा क्या है, वेयर इज द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस डिटरमिन्स इट्स फोनेटिक फॉर्म। जब हम सरफेस स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना तो ये किसी सेंटेंस के फोनेटिक स्ट्रक्चर को देखेगी। ठीक है, यानी फोनेटिक स्ट्रक्चर का मतलब ये कि किस तरीके से इसकी जो इसमें जो साउंड्स है, इसका जो फोनेटिक फॉर्म है वो किस तरीके से है। ठीक है, और थर्ड क्या चीज़ होगी इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस इज अ लिंक बिटवीन द डीप स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस एंड देयर सरफेस स्ट्रक्चर। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशंस फंक्शंस जो होता है वो इन दोनों के दरमियान में एक ब्रिज का काम कर देता है, यानी सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर के दरमियान में एक ब्रिज कायम करता है, उसके दरमियान में ताल्लुक़ कायम कर देता है। ठीक है, और फिर क्या कर देता है, उससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस जो ना इसका सरफेस स्ट्रक्चर क्या है और डीप स्ट्रक्चर क्या है। सेकंड मैं ये कहूँगा कि जो हमारे पास सरफेस स्ट्रक्चर होता है ना वो एक सेंटेंस होता है, और डीप स्ट्रक्चर जो होता है ना, डीप स्ट्रक्चर आप उसी सेंटेंस को क्या कर देते हैं, उसी सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हैं, उसमें नए नए अल्फाज आप डाल सकते हैं। जिस तरीके से हमारे पास है विजिटिंग डॉक्टर्स कैन बी अ नाउसेंस। ठीक है, तो ये सरफेस स्ट्रक्चर है। अब इसी सेंटेंस को हम जो है ना इसको हम चेंज कर देते हैं ना, इसमें कुछ चीज़ें हम पुट कर देते हैं, जैसे अल्फाज वही होंगे लेकिन उसमें एक सेंटेंस ऐसा होगा कि उसमें इस फर्स्ट वाले सेंटेंस के कुछ ना कुछ इसके अल्फाज मिलते जुलते हमें नज़र आएंगे। कैसे? हमने कहा कि इसका डीप स्ट्रक्चर पहले होगा वी विजिट डॉक्टर्स, नंबर एक, और पहले सेंटेंस में भी डॉक्टर कैन बी नॉनसेंस, ये एक सरफेस स्ट्रक्चर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सरफेस स्ट्रक्चर जो होता है वो एक ही होता है, और डीप स्ट्रक्चर जो होता है ना वो एक से ज़्यादा होता है। ठीक है, एंड ट्रेडिशनल ग्रामर्स वी हैव टू और थ्री type of the grammars. First of all, traditional grammars. What's mean by traditional grammar? So after that we will explain, and the second part of this lecture or the second slide. Okay, we have passive and active sentences. The subject of the sentence, if the subject is do something, shows us the action in the beginning of the sentence, so it's mean that's passive form of the sentence. Okay, and active mean this the subject is active, they do or they perform some action, this is called active form of the sentence. But the distinction between them is a difference in their surface structure, that is the syntactic form. What's mean by traditional grammar? By traditional grammar is mean basically the Aristotelian orientations toward the nature of a language is exemplified in the work of the ancient Greeks and Romans, the speculative work of the medieval, and the prescriptive approach of the 18th century grammarians. I want to explain in Urdu.
देखो हमारे पास जो सबसे पहले जब हम ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करते हैं ना तो हम ग्रीक और लैटिन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो नॉलेज की जो ख़जाना है ना वो क्या है, ग्रीक ग्रीक की तरफ इशारा की जाती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास अरिस्टोटल है, और अरिस्टोटल प्लेटो वो भी है, और उसी उन्होंने जिन चीज़ों पर काम किया है, ये ग्रामर, ये फोनेटिक्स, ये लिंग्विस्टिक, फिलॉसफी, लिटरेचर, ये सारी चीज़ें जो है ना ये उसी ज़माने में अरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेट, इन लोगों ने इस पर काम किया हुआ है। वहाँ से फिर जो ना ये हमको जिस तरीके में आया है ना, तो इस पर आप लोगों ने सुना होगा रेनेसेंस या निशात सानिया। एंड रेनेसेंस मीन दैट द रिवाइवल ऑफ द एज, लर्निंग ऑफ द एज, न्यू एरा, मॉडर्न एरा ऑफ द एज। ओके, तो इसमें सब चीज़ों का जो है ना इसका ट्रांसलेशन होने लगा। तो वहाँ से जो कानून अरिस्टोटल ने बनाया था ग्रामर के लिए, तो वो हमारे पास जो है वो उसको हम जब देखते हैं ना तो वो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ मेथड था, ग्रामर का मेथड था। डायरेक्ट मेथड किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड किसे कहते हैं, जीएमटी मेथड किसे कहते हैं, ठीक है। ये आजकल जो हमारे पास आ रहे टेफल, टोफल, आइल्स, जीएमटी, ठीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारे जो ना ये इनके लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं ना, तो क्या ये डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है, कौन सा मेथड है, ये सारे मेथड जो है ना ये अरिस्टोटल ने उस ज़माने में उसने अप्लाई किए थे, और उसने अपने किताबों में, अपने ही लेक्चरों में उसने एक्सप्लेन किए थे। तो वहाँ पर जो ग्रामर लिखा गया था और जो कानून था, तो वो फिर वहाँ से लोगों ने इसको देख लिया, अडॉप्ट किया, और फिर उसके बाद जो है ना अमेरिकन लिटरेचर में और ब्रिटिश लिटरेचर में, लाइक 18th सेंचुरी में क्या हुआ, 18th सेंचुरी में इस सारे चीज़ों को देखा गया, और जो अप्रोचेस थे, टीचिंग के जो अप्रोचेस थे ना, उसको ग्रामर के रूप से जो है ना उसको चेंज करने लगे। तो इन ट्रेडिशनल चीज़ों को, यानी द मेथड ऑफ द अरिस्टोटल is called traditional grammars. Okay, however, the two sentences are very closely related, even identical at some less superficial level, and the other underlying levels has been called their deep structure. एक होता है जो हमारे पास पहले ही से जिस फॉर्म में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल फॉर्म कहते हैं, और एक वो होता है जो अंडरलाइंग लेवल पर जो होता है ना, जिसमें हम जो है ना उसको चेंज कर देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है वो डायरेक्ट फॉर्म में है, और उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो हम इनडायरेक्ट फॉर्म में ले जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डीप स्ट्रक्चर कहते हैं। डीप स्ट्रक्चर, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है ना ये पसंद आया होगा, और इसके बाद जो है ना हम डीप स्ट्रक्चर पर हम जो है ना नई वीडियो बनाने वाले हैं। इंशाल्लाह उसको हम डिटेल से है ना उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।